हेलो वेलकम टू पढ़ाई। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने वाले हैं। इन क्लास 6 you have learned about some fibers obtained from plants. You also learn that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece, hair of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. Do you know which part of sheep's body yield fiber? Are you aware how these fiber are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk which is woven into sarees? तो आप क्लास 6 में फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे कि जो प्लांट से मिलते हैं। इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल से मिलने वाले फाइबर में। तो जो वूल है, ठीक है, वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। और ये वूल जो है वो शिप के कौन से बॉडी पार्ट से निकलता है, वो भी हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चंस। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। सो सबसे पहले वूल की बात करते हैं। वूल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear a hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keep this animal warm. Wools derive from the hairy fibers. So वूल जो है हमें शीप, गोट, याक से मिलता है। और ये जो ठंडी जगह पे होते हैं वहाँ पे ये जो शीप या गोट या याक है तो उसको गर्म रखने के लिए काम आता है। एक्टिविटी 3.1 Fill the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any differences? Which one seems coarse and which one is soft? तो आपके शरीर में भी जैसे आम पे बाल है या सर पे बाल है, दोनों क्या सेम है? नहीं है, राइट? Like us, the hair skin of the sheep has two types of fibers that forms its a fleece. तो उसी तरह से ये जो शीप है उसमें भी दो तरह के बाल देखने को मिलते हैं, फ्लीस देखने को मिलते हैं। The coarse beard hair and the fine soft under hair close to their skin. The fine hair provide the fiber for making a wool. Some breed of sheep possess only fine under the hair, and their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft hair under hair. This process of selecting parents for obtaining a special characters in their offspring, such as a soft under hair in a sheep, is termed as selective breeding. ठीक है। सो जब भी दो तरह के वूल यहाँ पे शिप में होते हैं, एक तो कर्स बियर्ड होते हैं आउटर और एक तो अंडर। जो अंडर वाले होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं जिसका वूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो स्पेशली इस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं शिप और उनके जो पेरेंट है जिनका सॉफ्ट वूल ही ज़्यादातर वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। एनिमल दैट यील्ड वुड, यील्ड करना मतलब बनाना। सेवरल ब्रीड ऑफ sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. The wool commonly available in the market is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from the Angora goats. So this is a type of wool in hilly regions of such as Jammu and Kashmir. तो वूल है वो हमें अलग अलग जगहों से मिलता है। और यहाँ पे याक शीप का वूल जो हमें कॉमनली तिब्बत और लद्दाख में मिल जाता है, और मोहर जो वूल है वो अंगोरा गोट से मिलता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं। Wool is also obtained from the goat hair. The under fur of Kashmiri goat
is soft. It is woven into fine swirls called pashmina swirls. So which is very famous pashmina swirls actually. तो गॉट के हेयर में से भी बनाई जाती है स्वॉल, जो कि कश्मीरी गॉट है एक, और उसमें से मिलती है पश्मीना स्वॉल्स. The fur on the body of camel is also used as a wool. Llama and alpaca found in South America, which is also held in the wool. Activity 3.2. Collect the pictures of animal whose hair is used as a wool. Stick them into your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them some from here in this book. Find out the word sheep, goat, camel and yak in your local language and also other language of our country. So llama, alpaca, right? So you can just see the different animal. Yak. Activity 3.3. Produce outline map of India, the world. Find out the marketplace, the map where you can find these animals and provide the wools. Use different colors to denote the locations of for different wool yielding animals. तो आप ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं. From fibers to wool. For obtaining a wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process, rearing and breeding of sheep. If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves. Apart from the grazing, sheep rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cake, and minerals. In winter, sheep are kept indoor and fed on leaves, grain and dry fodder. तो अगर आप कहीं घूमने जाओ इंडिया में तो आप देख सकते हो कि जो चरवाहे होते हैं वो भेड़ वगैरह को रखते हैं और उनको वो हर्बीवोरस होते हैं यानी शाकाहारी, तो उन्हें पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक वगैरह सब खिलाया जाता है. इन sheep are reared in many parts of our country for wool. Gives the name of the some breed of sheep reared in our country for producing wool. The quality and the texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. So in this table it is already given. Certain breeds of sheep have a thick coat of hair on their body which leads good quality wool in a large quantity. As the mentioned earlier, the sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed the thick growth of hair is shaved off for getting a wool. Processing a fiber into wool. So the wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involve the following steps. Step 1 is called shearing. Shearing. The fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from the body. This process is called shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. This enables the sheep to survive without the protective coats of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain the woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it doesn't hurt when we get hair cut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of the sheep grows again just as your hair does. तो सबसे पहला प्रोसेस है वो जो है उसको बालों को हटाना है, उसको शेयरिंग बोलते हैं. खासतर इसको समर में किया जाता है ताकि ये किसी विंटर में उनके ये जो वूल है वो एनिमल को प्रोटेक्ट करता है और इससे कोई दर्द नहीं होता क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे हमारे बाल काटना, जिससे हमें कोई दर्द नहीं होता. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सो मेक श्योर यू कीप रिमेंबर दिस ऑल types of breed and quality of wool. There are many types of question that comes which wool is good for shawls. So here it is a Bakharwal, where it is found Jammu and Kashmir. That kind of the question may they ask in your school book.
Step 2 is shredded skin with the hair is thoroughly washed in the tank to remove grease, dust and air dirt. This is called a scouring. Nowadays scouring is done by machine. दूसरा स्टेप है साफ सफाई करने का, गंदगी जो है उसमें से हटाने का. Step 3 is called shorting. After scouring, shorting is done. The hair skin is sent to factory where the hair of different texture are separated or sorted. Step 4, the small fluffy hair fibers called burrs. Yeah, that's not what is burrs. Are picked out from the hair, and these are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fiber are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. Step 5. The fibers can dried in a various colors as a natural fleece of the sheep and a goat is a black, brown or white. तो 4th स्टेप है जिसमें फ्लफ़ी छोटे छोटे जो है फाइबर वो निकाले जाते हैं. स्टेप 5 जो है उसमें उसको कलर किया जाता है, करने के लिए तैयार होता है क्योंकि इट इज़ ओनली ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर. स्टेप 6 है द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, combed and rolled into yarn. The longer fiber are made into a wool for sweaters and the shorter fiber spun for the woven into a woolen clothes. So this is the process given: shearing, scouring, shorting, cleaning, burrs, dyeing and rolling. So that's how the whole process done. Okay, let's now talk about the silk. Silk fiber are also animal fiber. Silkworm spin the silk fiber. The rearing of silkworm for obtaining a silk is called a sericulture. तो जो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्कवॉर्म को रखा जाता है तो उसको सेरिकल्चर बोलते हैं. Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of the silk saris they wear and list the different kind of silk saris they have. Before we discuss the process of obtaining the silk, it is necessary to know interesting life history of the silk moth. यानी ये जानने के लिए पहले हम लोग सिल्क मॉथ जो एक कीड़े होते हैं जिसमें से सिल्क बनाया जाता है उसकी लाइफ हिस्ट्री जानते हैं. The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworm. तो जो उसमें सिल्क मॉथ है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, जब वो एग रखते हैं उसमें से बाहर आते हैं लार्वा जिसको हम सिल्क caterpillar या तो silkworm कहते हैं. They grow in the size when the caterpillar is ready to enter the next stage of his life. History is called a pupa. वो थोड़ा खा के थोड़ा बड़े होते हैं जिसको हम लोग pupa बोलते हैं. It first weaves a net to hold itself, then it swings its head from side to side and from the figure of 8. During this movement of the head, the caterpillar secreted a fiber made up of the protein which hardened out on exposure to air and become a silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa. This covering is known as a cocoon. तो फिर ये जो कीड़े हैं वो थोड़े बड़े होने के बाद अपने आसपास एक 8 नंबर जैसा वो प्रोटीन के थ्रेड से जाला बना देते हैं जिसको आप कोकून बोलते हो. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू द मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून. और फिर उसके बाद में अंदर वो डेवलप होता है. सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ्स. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज अ स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ अ स्टील. तो अगर आपको इसको कंपेयर करना है इसकी स्ट्रॉन्गनेस से तो ये स्टील जितना मजबूत होता है. Silk yarn is obtained from the cocoon of silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one to another, and the silk yarn is yielded in different texture: coarse, smooth, shiny. Thus, tussar, muga silk, tussar silk, kosa silk are the different type of silk are obtained from the cocoon spun by the different type of moths. The most common silk moth is mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in a beautiful colors. तो जो उसकी varieties हैं silk moth की उसके ऊपर से वो different texture वाले silk produce करते हैं और इसमें ये नाम दिए हुए टसर, मूंग, कोसा वाले. और इनमें जो सबसे common है वो mulberry silk moth है.
So we are, and because they are lustrous, soft and elastic as well. Sericulture or a culture of silkworm is very old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale. So there are activities. 3.5 is given that you can collect the piece of silk and do some work on it. Activity 3.6, where you can learn about the artificial or synthetic silk that you will learn later on. And then 3.7, where you can cut out the pictures and find out the more about silkworm. From the cocoon to silk. So अभी हमने जब cocoon की बात की, cocoon में से कैसे silk बनता है. For obtain, silk moth are reared and their cocoons are collected to get a silk thread. Rearing silkworm, a female silk moth lay 100 of eggs at a time. The eggs are stored carefully on the strip of clothes or a paper and sold to silkworm farmers. तो एक ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है बहुत सारे 100 जैसे एग देते हैं, तो उसको एक कपड़े में रख के फार्मर्स को बेच दिया जाता है. द फार्मर्स कीप eggs under a hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. और जो उनको रेयर करते हैं वो फार्मर में उसको अच्छी जगह पे रखते हैं. The egg are warmed to suitable temperature for the larva to hatch from the egg. और उसको इतना sufficient temperature दिया जाता है कि वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ सके. This is done when the mulberry trees bear a fresh crop of leaves. तब तक जब तक कि वो mulberry tree के अच्छे अच्छे जो पत्ते हैं वो ना आ जाए. The larva called caterpillars or silkworms eat day and night and increase the enormous in size. और फिर वो mulberry tree के leaves जो हैं वो खाते हैं day and night और बड़े होते जाते हैं. The larvae are kept in clean bamboo trays along with the freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon. Small rakes or twigs may be provided in the trays to which the cocoons get attached, and the caterpillar or silkworm spin the cocoon inside, which develop the silk moth. और उसके वो 25-30 दिन के बाद वो खाना बंद करके अपने आसपास वो जो कोकून है उस सिल्क बनाना शुरू कर देते हैं. Processing silk. A pile of cocoon is used for obtaining silk fibers. These cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. और वो कीड़े जब एकदम पूरे कोकून बन जाते हैं या तो उसको सन के अंदर ड्राई कर दिए जाते हैं या तो स्टीम वाटर में डाल दिए जाते हैं. द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, और फिर उसमें से सिल्क फाइबर निकाला जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज ऑफ एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. जिस तरह से उसमें से सिल्क निकाला जाता है उसको रीलिंग द सिल्क बोलते हैं. रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन विच अनबाइट द थ्रेड ऑफ फाइबर of a silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into a silk thread which are woven into silk cloth by weavers. और फिर उस मशीन में से वो थ्रेड निकाले जाते हैं और फिर जो वीवर्स होते हैं वो सिल्क फाइबर में से सिल्क बनाते हैं. So that's the end of the chapter.